channel Aditi GS Center, and let's begin with our lesson, that is the force and pressure. This chapter is of 8th standard and its subject is the science. Force and pressure means bal or dabav. So as from this chapter we may have understood that this chapter consists of the two topics. The first one topic is the force and the second one topic is the pressure. And also in this chapter we will see the two parts. In the first one part we will see about the first one topic, that is the force, and in the second one part we will see about the second one topic, that is the pressure. So now we will begin with our first one part. So in the first one part, first of all we will see about the Newton's first law of motion. So first we will begin with our Newton's first law of motion. A stationary object on which no force is acting remains stationary. An object in motion continues to move with the same speed and with the same direction when the force is not acting on that object. So this is called as the Newton's first law of motion. तो एक जो मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी स्थिर वस्तु होता है, तो जब भी उस पर कौन सा भी बल कार्य नहीं करता है तो ऑब्वियसली वो स्थिर ही रहेगा. और एक ऐसी वस्तु जो कि गति में होती है और एक ही रफ्तार के साथ और एक ही दिशा में वो हमेशा जाती है, जब भी उस पर कौन सा भी बल कार्य नहीं करता है तो ये क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसे कहा जाता है. A force acts on the two bodies through an interaction between them. तो एक जो बल होता है ये दो वस्तुओं पर या दो मतलब बॉडी पर कार्य करता है जब भी उन दो बॉडीज या दो वस्तुओं के बीच में क्या है, इंटरैक्शन है यानी प्रभाव है. So first of all we will say about our first one point, that is the contact force. Contact force means संपर्क बल. A force that acts between the two objects or via one more objects means it acts directly through the two objects or via one more object. It is called as the contact force. तो एक ऐसा बल जो कि सीधी तरीके से दो वस्तुओं पर कार्य करता है और उसके साथ ही एक भी उसके वस्तु के साथ कार्य करता है या दो वस्तुओं के साथ कार्य करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल कहा जाता है. सो वी विल सी अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, लाइक द मैन इज पुशिंग द कार फ्रॉम द बिहाइंड एंड द कार इज मूविंग फॉरवर्ड. The second one example is that the master is pulling his dog, and third one example is that the boy is kicking his football. तो हम संपर्क बल के उदाहरण देखेंगे कि एक जो इंसान है वो कार को पीछे से धकेल रहा है और तभी वो कार आगे जाएगी. दूसरे वाला एग्जाम्पल है कि जो डॉग है उसके गले में क्या है, पट्टा है, और उस पट्टे से उसका जो मास्टर है वो उसे खींच रहा है, उसका मालिक उसे खींच रहा है. और तीसरा वाला क्या है कि एक जो लड़का है वो अपने पैर से जो बॉल है, फुटबॉल है, उसे किक कर रहा है. So from this example we may have understood that the mainly force is used here is the muscular force. So the muscular force is also an example of the contact force, and all such activities can be done with the help of our muscles. And the muscular force can be also used for the several cases such as the lifting, pushing and pulling. तो मस्कुलर फोर्स, मांसपेशीय बल, हमने इन तीनों एग्जाम्पल में से हमने क्या देखा कि ये तीनों कार्य करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, मास की ज़रूरत होती है. और ऐसे प्रकार का जो बल होता है उसे क्या कहा जाता है, मस्कुलर फोर्स यानी मांसपेशीय बल कहा जाता है. और मांसपेशीय बल जो होते हैं ये संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एक उदाहरण है. और मास के द्वारा हम कौन सा भी कार्य कर सकते हैं, किसकी मदद से, मास की मदद से, मसल की मदद से. और मस्कुलर फोर्स के द्वारा हम और कई सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि किसी को उठाने के लिए, खींचने के लिए या धकेलने के लिए, ये सब हम कार्य मस्कुलर फोर्स की मदद से करते हैं. सो आवर फर्स्ट वन पॉइंट, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज गेट कंप्लीटेड. When a coconut is falling from the tree, it gets attracted towards the earth. It means that it gets attracted towards the earth. This type of the force is called as the gravitational force. तो जो नारियल है वो पेड़ पे से गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है ये उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, इसीलिए वो नारियल गिर रहा है. तो ऐसे प्रकार का जो बल होता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है. And when the comb is rubbed against our hair and it is kept on the table, as well the small pieces of the paper are also kept on that particular table.
So the pieces of the paper will get attracted towards the comb and such type of force is called as the electrostatic force. तो जब हम कंघी को हमारे जो बाल है उसे ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमारे बाल पर क्या है, तेल है उसी वक्त, तो अगर हम उस कंघी को एक टेबल पे रखेंगे और एक जो कागज़ के टुकड़े हैं उसे भी उसी टेबल पर रखेंगे, तो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो उस कॉम्ब यानी उस जो कंघी है उसके तरफ वो आकर्षित हो जाएंगे। तो ऐसे प्रकार का जो बल होता है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल कहा जाता है। So now we will see about our second one point, that is the non-contact force यानी गैर संपर्क बल, a force that acts between the two objects even the two objects are not in contact with. So such type of force is called as the non-contact force. तो एक ऐसा बल जो कि दो वस्तुओं के बीच में कार्य करता है, लेकिन वो जो दो वस्तुएं होती है वो एक दूसरे के संपर्क के साथ नहीं होती है, फिर भी वो बल उन पर कार्य करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है, इसे गैर संपर्क बल कहा जाता है। लाइक द मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स act without in contact with them, so they are also an example of the non-contact force. तो जैसे कि चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और जो विद्युत बल होते हैं ये बिना एक दूसरे के संपर्क के साथ वो कार्य नहीं करते हैं, तो ये भी एक उदाहरण है, किसके उदाहरण है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी गैर संपर्क बल के उदाहरण है। सो आवर सेकेंड वन पॉइंट दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज गेट completed. So as in the previous videos as well as in the previous chapters, we have seen the various types of the forces as well as we have learned about that forces like such as the muscular forces, electrostatic forces, mechanical forces and the frictional forces, combined forces, magnetic forces. We have seen such a various types of forces and also we have understood its definition. So now we will see about a frictional force. Now we will see. So if we have placed a ball on the floor and if we will push it a little, so it will move forward, it will become slow and then it will stop. And if the car is running in the straight line and when the car is means the engine of, when we off it's the car engine, so it travels to some distance and it will be stop at that line. So why this object stop? Because there has the force of friction between the earth surface and the object in the motion. तो एक जो मतलब बॉल है उससे हमने ज़मीन पर रखा है और उसे अगर हम धकेलेंगे तो वो बॉल घूमते 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 आगे चला जाएगा और बाद में आगे जाकर वो रुक जाएगा। और एक जो कार है ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो अगर हम उसका इंजन ऑफ कर दें तो वो कार भी क्या धीरे 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 जाएगी और रुक जाएगी फाइनली। तो ऐसा क्यों होता है, जो वस्तुएं होती है गति में ये रुक क्यों जाती है? क्योंकि जो पृथ्वी की सतह होती है और जो वस्तु होते हैं गति में उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है यानी घर्षण का बल होता है। एंड इफ इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन so the objects in the motion will be remain in that motion only, they will be not stop, and the force of friction is very important for us in our daily life. And the force of friction will be not present, so we will not be able to walk on the surface of the ground as well as we will be fall on that ground, we will be slip on that ground. तो जो force of friction यानी घर्षण का बल जो है इससे क्या होता है, मतलब ये अगर नहीं होगा तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वस्तुएं होती है गति में, ये हमेशा गति में रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। और जो घर्षण का बल है ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए पूरे दिन भर दिन जीवन में। और जो घर्षण का बल होएगी वो अगर नहीं रहेगा तो हम ना ज़मीन पर चल सकते हैं, हम ज़मीन पर चलेंगे तो डायरेक्टली हम ज़मीन पर गिर जाएंगे। सो नाउ वी विल सी अबाउट आवर थर्ड वन पॉइंट, दैट इज़ द बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस मीन्स संतुलित बल। So, if a body is acted upon by the two forces equal in the magnitude, opposite in the direction, and having the same line of action, the forces are called as the balanced forces. And here the force acting on the body is the zero. तो balanced forces यानी क्या होता है, संतुलित बल होता है। तो जो दो वस्तुएं होती है, दो ऑब्जेक्ट होती है, उनके बीच में एक समान संतुलन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड फोर्सेस कहा जाता है यानी संतुलित बल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी विल सी दैट
The children are playing the tug of war and they are pulling the ropes in their respective direction as well as in their respective teams. So if the pull of rope is equal in both of the direction as well as in the team, so this will become the balanced forces and also this is an example of the balanced forces. तो एक संतुलित बल का हम एक उदाहरण देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो टग ऑफ वार खेल रहे हैं और वो जो रस्सी है उनके दिशा में उनके टीम में वो एक जैसे खींच रहे, जो मात्रा है उनकी रस्सी की वो दोनों टीम में बराबर ही है। तो ये क्या हुआ, संतुलित बल हो गया, बैलेंस्ड फोर्सेस हो गया। So our the third one point, that is the balanced forces, it is get completed. Now we will see about our fourth one point, that is the unbalanced forces यानी असंतुलित बल। If two or more forces act on the body such as the resultant is not zero, the resultant is an unbalanced force and it produces the acceleration in the body. तो जो असंतुलित बल होता है वो क्या होता है कि जो दो वस्तुएं होती है उनके बीच में संतुलन नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है, असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहा जाता है। एंड ऑल्सो वी विल अंडरस्टूड इट एग्जाम्पल, दैट इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द टग ऑफ वार एंड दे आर पुलिंग द रोप्स इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन बट द पुल ऑफ रोप इज मच लार्जर देन द वन टीम, सो दिस विल बिकम द unbalanced forces and also it is an example of the unbalanced forces. तो इसका हम उदाहरण देखेंगे संतुलित बल का कि जो बच्चे हैं वो टग ऑफ वार खेल रहे हैं, तो जो टग ऑफ वार है एक टीम के पास बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर रस्सी है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर रस्सी है और इस टीम के पास बहुत ही कम प्रमाण पर रस्सी है। तो जो टीम है ये क्या मतलब ये क्या हुआ, असंतुलित बल हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। So our fourth one point, that is the unbalanced forces, is also get completed. So now we will see about our fifth one point, that is the inertia. The tendency of an object to remain in its existing state is called as the inertia. तो जो टेंडेंसी होती है मतलब जो वस्तु होती है वो अपने मौजूद स्थिति में रहती है और ये ही उसकी प्रकृति होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है यानी जड़ता कहा जाता है। So now we will understood the types of the inertia. तो अभी हम types of inertia यानी जो जड़ता है उसके प्रकार को समझेंगे। So here the first one type is inertia of the state of rest यानी जो विश्राम की स्थिति का जड़ता। Now we will understand about the first one type. An object in the state of the rest cannot change. It's the state of the rest. Why? Because of its inherent property. And this property is called as the inertia of the state of rest. तो एक जो वस्तु है वो मतलब वस्तु जो है वो अपने आराम की स्थिति में है और वो अपने आराम की स्थिति को बदल नहीं सकती। क्यों बदल नहीं सकती? क्योंकि उसके इनहेरेंट प्रॉपर्टी है यानी प्राकृतिक संपत्ति है, इसलिए वो बदल नहीं सकती। तो इसे क्या कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट यानी आराम की स्थिति का जड़ता। देन आवर फर्स्ट वन टॉपिक, that is the inertia of the state of rest, it is get completed. Second one type we will see, that is the inertia of the motion यानी गति का जड़ता। The inherent property of an object to which the state of the motion cannot be changed, it is called as the inertia of the motion. For example, when the revolving electric fan continues to revolve even if we switch off its button. तो अगर जो मतलब प्राकृतिक संपत्ति होती है किसी भी वस्तु की जो कि अपनी जो गति है उसे उसकी स्थिति को गति की स्थिति को वो बदल नहीं सकती, तो इसे क्या कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गति का जड़ता कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक पंखा होता है, तो उसके बटन को हम ऑफ कर दे, बंद कर दे, फिर भी वो घूमता ही रहता है स्लो, वो इंस्टेंटली लाइट बल्ब जैसा थोड़ी ना बंद हो जाता है, वो थोड़ी देर तक घूमेगा 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 फिर बंद हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण है इनर्शिया ऑफ द मोशन का। सो द सेकेंड वन टाइप, इनर्शिया ऑफ द मोशन, इज ऑल्सो गेट completed.
Now we will see about our third one type, that is the directional inertia यानी दिशा का जड़ता. The inherent property of an object due to which the object cannot change the direction of the motion, so it is called as the directional inertia. Like for example that the vehicle is moving in the straight line and suddenly it turns, so the passenger sitting in that vehicle will be thrown opposite to the direction on of turning. तो जो हम देखेंगे अभी तीसरा वाला प्रकार जो कि डायरेक्शनल इनर्शिया यानी दिशा का जड़ता. तो जो प्राकृतिक संपत्ति होती है किसी भी वस्तु की जो कि अपनी गति की जो दिशा है उसे बदल नहीं सकती, तो इसे क्या कहा जाता है? डायरेक्शनल इनर्शिया यानी दिशा का जड़ता कहा जाता है. जैसे कि उदाहरण के लिए एक जो व्हीकल है, कार है, वो आराम से रास्ते पर जा रही है और जो उसमें लोग बैठ रहे हैं वो आराम से उसमें एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, कि सडनली वो कार टर्न हो जाती है, बाजू में टर्न हो जाती है, तो उनको एक झटका सा बैठ जाएगा और वो उस दिशा के विरुद्ध दिशा में चले जाएंगे. तो इससे ही क्या कहा जाता है? डायरेक्शनल इनर्शिया. ये एक एग्जाम्पल है डायरेक्शनल इनर्शिया का. सो अवर थर्ड वन type, that is the directional inertia, it is also get completed. So the type of inertia topic which is included in our point of the inertia, it is get completed. Now we will see about our sixth one point, that is the buoyant force. When an object is immersed into the liquid and it has the force from the upper side, so this is called as the buoyant force. For example, we will see that the boat is sailing on the river or the sea, as well as the icebergs are floating on the river or the sea. तो बुoyant फोर्स का मतलब है उत्प्लावक बल. तो बुoyant फोर्स क्या होता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु होता है, ये लिक्विड यानी जो पानी जैसे होता है लिक्विड, तो उसके अंदर वो वस्तु चला जाता है और वो चले जाने के बाद उस पर क्या आता है? दबाव आ जाता है ऊपर से. तो इसे क्या कहा जाता है? बुoyant फोर्स कहा जाता है. और बुoyant फोर्स के मतलब एग्जांपल्स क्या है, उदाहरण क्या है कि जो बोट है, जो जहाज है, वो महासागर या समुद्र पर तैर रही है, मतलब चल रही है, और जो आइसबर्ग है यानी जो आइस क्यूब्स है, ये भी जो महासागर या जो कुछ रिवर है उस पर वो तैर रहे हैं. सो आवर सिक्स्थ वन पॉइंट, दैट इज द बुoyant फोर्स, इज आल्सो गेट completed. Now we will understood our the last one topic, that is the effects of the force acting on a body. यानी जो फोर्स है, जो बल है, उसके हमारे मतलब जो बल है उसके क्या प्रभाव होते हैं बॉडी पर, ये हम समझेंगे. So in it we will say about the 6 types of the points. The first one is a force can be set a body into the motion. For example, if the ball is kept on the floor and if we will push it, so it will move ahead, it will roll on the floor and it will move ahead. तो जो फोर्स है, जो बल है, ये किसी भी वस्तु को मोशन में या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को वो मोशन में ला सकता है, गति में ला सकता है. जैसे कि उदाहरण के लिए एक जो बॉल है उसे ज़मीन पर रखा गया है और उसे अगर हम धकेलेंगे आगे तो वो धीरे धीरे घूमते हुए आगे चला जाएगा. Then the second one is a force can stop a moving body. For example, a moving bicycle can be brought into the rest by the application of the brakes. तो जैसे ही जो बल होता है वो किसी भी वस्तु को मतलब मोशन में लाता है, गति में लाता है, तो वैसे ही उस मोशन में से वो जो ऑब्जेक्ट या जो बॉडी है उसे रुका भी सकता है. और इसका उदाहरण है कि जो बाइसिकल है वो जा रही है और अगर हम उसको रोकना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे? ब्रेक्स का अप्लाई करेंगे, तभी वो रुकेगी. और ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल का इस्तेमाल कर रहे हैं. Then the third one point is a force acting on the body can change the speed of the body. For example, when the brakes are applied to the moving bicycle, its speed decreases due to the friction between the brake shoes and the rim of the tire. तो जो फोर्स है, जो बल है, वो किसी भी जो बॉडी है, किसी भी जो वस्तु है, उसकी जो रफ्तार है उसमें भी वो परिवर्तन ला सकती है. जैसे कि उदाहरण के लिए जो मतलब ब्रेक्स है उसे हमने बाइसिकल को पर लगा दिया है, मूविंग बाइसिकल पर ब्रेक्स लगवा दिए हैं, तो उसकी जो रफ्तार है ये कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो उसके ब्रेक शूज़ है और उसके जो रिम ऑफ टायर है उनके बीच में क्या है? घर्षण है, फ्रिक्शन है, इसलिए.
Then the fourth one is a force can change the direction of the motion of the body. For example, in a uniform circular motion of the body, the direction of the motion of the body keeps on changing due to the applied force. तो जो बल होता है वो किसी भी जो मतलब मोशन में यानी जो गति में जो दिशा होती है कौन सी भी ऑब्जेक्ट की या कौन सी भी बॉडी की, उसमें भी परिवर्तन ला सकता है. यानी जो एक समान वृत्ति या गति जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की, तो जो दिशा होती है उसकी गति की वो बदलती रहती है. क्यों बदलती रहती है? क्योंकि हम उस पर बल लगा रहे हैं, इसलिए वो बदलती रहती है. Then the fifth one is a force can change the speed as well as the direction on the body on which it is acting. For example, when the ball is bowled by a bowler and it is hit by the batsman, so there occurs the change in their speed as well as in the direction of the ball in the motion. तो जो बल होता है ये किसी भी वस्तु को या किसी भी बॉडी की जो मतलब रफ्तार है या दिशा है उसमें भी परिवर्तन ला सकती है दोनों को. जैसे कि उदाहरण के लिए एक जो गेंद है उसे गेंदबाज ने फेंका है और जो बैट्समैन है उसे वो छक्का लगा रहा है उस बॉल पर, तो उस बॉल की जो दिशा है और उसकी जो रफ्तार है इसमें परिवर्तन हो रहा है. उसकी गति में जो उसकी दिशा और उसकी रफ्तार है उसमें परिवर्तन हो रहा है. Then the sixth one is a force can change the shape as well as the size of the body on which it acts. For example, when the rubber ball is pressed and it gets deformed and hence it no longer remains the spherical. तो एक जो बल है वो किसी भी वस्तु का या किसी भी बॉडी का जो मतलब वह साइज होती है या आकार या आकृति होती है उसमें भी परिवर्तन ला सकता है. जैसे कि उदाहरण के लिए जब भी जो रबर बॉल है जब भी हम उसको दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा यानी विकृत हो जाएगा और वो ज़्यादा देर तक गोल आकार में नहीं रहेगा. सो अवर द टॉपिक दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट इज ऑल्सो गेट completed. So this was the first one part of the chapter force and pressure, which the first one part is get completed. In this one part we have seen about the Newton's first law of motion. In it we have seen that a stationary object on which no force is acting remains stationary. An object in motion continues to move with the same speed and with the same direction when the no force is acting on that object. So this is called as the Newton's first law of motion, and a force acts on the two bodies through an interaction between them. So then we have seen about our first one point, that is the contact force. About the contact force we have seen its definition and also we have understood its example like the muscular force we have seen about this. Then the second one our topic or the point is non-contact force. In it we have understood the definition of the non-contact force and also we have seen the we have seen like the magnetic force, gravitational force and electrostatic force acts without the contact. So they are also an example of the non-contact force. Then the third one point, that is the balanced forces. In it we have understood the definition of the balanced forces and also we have seen the example of the balanced forces like the children are playing the tug of war of that. Then the fourth one point, we have seen unbalanced forces. We have understood the definition of the unbalanced forces and also we have seen that the example of the unbalanced forces, that the children are playing the tug of war and the large proportion of the rope goes in the one direction or the team, that is the unbalanced forces. Then the fifth one point we have seen, that is the inertia. That means the tendency of an object to remain in its existing state is called as the inertia, which remains in that existing states, that is called as the inertia. And also we have understood the types of the inertia. We have seen the first one type is the inertia of the state of rest. Then the second one topic or the type we have seen, that is the inertia of the motion. In it we have seen that what is the inertia of the motion and also we have seen its example. Then the third one type we have seen, that is the directional motion. We have seen that what is the directional motion and also we have understood its example. Then at last sixth one point, that is the buoyant forces. We have seen that when an object is immersed into the liquid and it has the force from the upper side, so this is called as the buoyant forces. And also we have understood the example of the buoyant forces. Then at last we have seen about the topic, that is the effects of a force acting
acting on the body that we have currently learned. In it we have seen about the 6 types of the points. So this is our first one part of the chapter, force and pressure, and also we shall learn in our second one part the topic that is the pressure. Jai Hind.